Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. This week, drop in at the house where Kamla Nehru was born and return to an era of grandeur in the Haveli that Chunamal built. Sitaram Bazaar is one of those areas of the walled city where the dust from hundreds of passing wheels hangs in the air like a curse. Rickshaws, tailors and pedestrians form a crush where few motor vehicles dare to tread. Off this packed thoroughfare stands an arched gate announcing the presence beyond of a market named after its late owner. When Rameshwar Dhamani bought this property, he was aware of its significance. Here, almost a century ago, a girl named Kamla was born, whose name was to become an indispensable part of Indian political history. Today, this property is managed by Shyam Ratan Khandelwal, Dhamani's youngest brother. ये मकान जो है, इसके मालिक थे अटल फैमिली, और वो अटल फैमिली जो है काफ़ी उसके जो है अटल फैमिली के मेंबर्स थे वो जयपुर में रहते थे, तो उनके संबंध हमारे भाई साहब से थे। अभी भी जो है स्वरूप रानी कारजू जो कमला नेहरू जी की सिस्टर हैं वो जयपुर में रहती हैं, और उनके हस्बैंड पीएन कारजू थे, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो जो पीएन कारजू साहब थे वो हमारे भाई साहब के मित्र थे। उन्होंने हमारे भाई साहब से कहा इस मकान को ख़रीद लीजिएगा, और दूसरे जो अवनी कुमार मुखर्जी उनसे कहा। फिर ये मामला ऐसे था कि यहाँ पे कमला नेहरू का जन्म हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी भी इसमें हुई थी। तो मेरे भाई साहब ने मुझसे कहा कि इस मकान को ख़रीदा जाए या नहीं का ख़रीदा जाए। तब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और हमने उनसे कहा कि ये मकान हिस्टोरिकल है, हम ख़रीद लेंगे तो आगे सरकार इसको एक्वायर कर लेगी, तो आप ऐसा हमें कुछ लिख के दे दीजिएगा जिससे सरकार एक्वायर नहीं करे। उस वक्त एक एमपी थे जिनका मैं लेटर आपको बताऊं, मिस्टर मिर्ज़ा अहमद अली एमपी, वो इस मकान को कोशिश कर रहे थे कि इसमें कमला नेहरू का मेमोरियल बने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरा जो कुछ भी था वो मैंने देश को दे दिया, ससुराल वालों की मैं जो है किसी चीज़ का देने का मुझे हक नहीं है। तो उन्होंने जो है मिर्ज़ा अहमद अली एमपी साहब को पत्र लिख के दिया। वो पत्र आप देख सकते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मकान को कभी एक्वायर नहीं करेगी, तब हमने उनसे ये मकान का फाइनल डील किया, मेरे बड़े भाई साहब श्री राम प्रसाद धामानी और अवनी कुमार मुखर्जी ने, और फिर इसका सेल डीड हो गया। और उसके बाद मेरे को उन्होंने अपना जनरल अटॉर्नी बनाया, क्योंकि वो जयपुर में रहते थे, मैं दिल्ली में रहता था, और इस मकान का जितना भी मैनेजमेंट था मेरे हाथ पे उन्होंने दिया। वो सितंबर 1962 से मैनेजमेंट आज तक चल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा मकान है, 2700 गज में ये मकान है, 4 मकानों में ये विभाजित है। तो यहाँ पे जो रहने वाली फैमिलीज़ हैं वो उनके जो है फैमिली मेम्बर्स करीबन 1000 आदमियों करीब हैं। The size of the property is vast, but it's now been sectioned off into various smaller sets which are rented out. Before the Cole family bought this house, this courtyard used to be a large tank where the women used to bathe. And it is here, in one of the rooms now let out, that the baby, later to be Kamla Nehru, was born. The present owners occupy only a small portion of the actual rambling house. There are still features in the architecture reminiscent of a more Baroque age. Of this courtyard, once surely kept spick and span,
The newlywed Jawaharlal and his bride would receive visitors on their visits to the bride's household. इंदिरा जी इस मकान में पधारी। पहले वो बराबर में एक धर्मशाला थी, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिली, उसके बाद यहाँ आई और 10 मिनट इस मकान में बैठी। उनका और मेरा वार्तालाप हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करा वो इसी मकान से शुरू किया। जब वो आज़ादी की लड़ाई के लिए गए तो उनकी सास जो है इसी मकान में रहती थी। उन्होंने बड़ी खुशी से उनको जो है जेल जाने के लिए विदा किया इस मकान से। उनका बाकायदा तिलक किया। यहाँ सारे बाज़ार की जनता ने उनको जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ जेल के लिए रवाना किया कि आज़ादी चाहिए हमको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इस मकान से काफ़ी प्यार था। और इंदिरा जी ने बताया कि वो बचपन में यहाँ कई बार आई थी, सो उनको इस मकान की याद आई और वो अचानक जो है इस मकान को देखने के लिए आई। The memories that this building has held have been dispersed by the winds of time, but Khandelwal has doggedly held on to the few that have come into his grasp. जब ये मकान खरीदा गया था उसका भी नक्शा मेरे पास है, वो भी आप देख सकते हैं। और कई अखबारों में समय समय पर निकलता रहता है इसमें इस मकान के बारे में, वो भी है। और इस मकान में जो बिजली का कनेक्शन लगा हुआ था वो पंडित चांद बहादुर कोल के नाम का है, जो कि कमला नेहरू जी के भाई थे। और गजट नोटिफिकेशन भी इसकी निकली थी, उसकी भी मेरे पास कॉपी है। और कमला नेहरू जो है यहाँ ही इसी बाज़ार के नज़दीक जो है एक स्कूल था, इंद्रप्रस्थ हिंदू बालिका विद्यालय, वहाँ पढ़ा करती थी, उसका भी मेरे पास ये प्रूफ है। और जो इसके पहले मालिकान थे उन्होंने जब ये मकान बेचा गया तो जनरल पावर टॉनीज़ जो है दी थी अपने दूसरे रिलेटिव्स को, वो भी मेरे पास ओरिजिनल है। और कमला नेहरू का एक रेयर फोटोग्राफ है जो कि लंदन की एग्जीबिशन में दिखाया गया था, वो भी मेरे पास है। तो इस प्रकार इस मकान की, और ये मकान सन 1876 का बना हुआ है, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। There is a letter from Kamla's sister, Saruprani Katju, to her Guruji, speaking of Kamla's birth in this house. There are orders and notifications from times when the administration has tried to acquire the house as a national monument. To counter these, the Khandelwals have a valuable piece of paper, a letter from Pandit Nehru himself, expressing his unwillingness to be a party to such a move. Khandelwal has also collected articles and pieces which speak about Kamla Nehru's connection with Atal House. Most of these are well researched, authenticated pieces which dwell upon the history of the house. Khandelwal himself has also written about Kamla Nehru in a magazine. In a way, the twist of fate that has linked Khandelwal to Kamla Nehru has also forged a link with the whole Nehru family. As a result, the house is also decorated with pictures of Khandelwal with successive generations of that family. That is his claim to fame. The claim that he lives in the house, which is an indelible link with not just one, but 3 of India's prime ministers. In Chandni Chowk, it often seems as though no one could possibly have space for more than is enough to fit one's body into. But some of these old facades hide a secret. In some of them, time has stood still, and the gracious life that these Havelis had once seen continues undaunted by changes without. This Chunamal Haveli is one such. Under the sign of the stopped clock,
is an ornamented doorway of the old style. Little details like these handrail supports give some indication of the antiquity and uniqueness of the Haveli's architecture. Nevertheless, one is not necessarily prepared for the era mirrored at the end of the staircase. The first signs emerge as one turns onto an angan, on the first floor no less. Members of the extensive Prasar family, which owns and occupies most of this grand building, go about their business in this yard. A few steps take one onto the balcony that really gives an idea of the size of the mansion. But it's the rooms that line this corridor that display the legacy of Lala Chunamal. It's a very old house, about 200 years old. My great-grandfather built this house for the family. Previously, we were living somewhere else. Then this was extended. This house was extended. A new portion was built in. We are the oldest family in Delhi, and probably this house is the only bigger house in northern India. The house that Chunamal built has been kept in a reasonable state of preservation, even as the standard of life around it has deteriorated. In the many rooms, spaces, nooks and crannies, a consistent style of living weaves together the traditional and the modern. Where renovation or rebuilding has occurred, it has been done in keeping with the existing architectural style. This is quite an evidence in new rooms such as this. Though the embellishments are modern, the pillared structure of the room imitates the old class. There are concrete remnants too of that age. This warehouse-like space once existed without the floor there is today. Then it constituted the upper reaches of a grand ballroom where princes and the upper crust disported itself. Chandeliers hung from these hooks, now rusty with disuse. Other features around the building hark of a style far removed from today's. The shape of some of the doors and windows and the ornamentation around them, the intricate carving of the woodwork, speak of that other time. Inside the rooms that these carvings decorate, the family has made it a point to retain objects of art that amplify the atmosphere the house builds up. Brilliant golden chandeliers hang from the silvered relief plasterwork of the ceiling. The shades of the lights are of a decorative style, hardly abundant anymore. Even the bric-a-brac on the tables and mantelpieces, if slightly kitsch, are at least like antiques. But the most spectacular collection is in the Prasar's drawing room. Massive mirrors reflect the grandiose lifestyle of the occupants of the house. Not one, but 9 chandeliers light up the room in all its glory. Paintings, some of them originals by Renaissance artists, vie for wall space with photographs a century old. Magnificent Japanese vases stand in purely decorative splendor. It is unlikely that any flower has graced these with its blooms. But the piece de resistance is surely the solid round table at one end of the room. In the shelter of the monolithic marble tabletop fashioned out of one slab of stone, Sheriff, a resident friendly Doberman, relaxes, probably unaware of the heritage that hovers over his head. It's a grand house, all right,
but the times do not encourage such grandeur anymore. Sections of the house, not so much in constant use, show signs of disrepair. Surely the Prasards must have a difficult time of maintaining a place like this. Well, maintenance is problem, but we have been able to do it till now. And I don't think we have failed in maintaining the house. It hasn't fallen to pieces. So far they've managed well enough. And therefore in the heart of Chandni Chowk, where a shoulder's width is all a resident can hope for, they have managed to retain an oasis of style that was once the way of Rajas.